Okay, so next point is here distance between parallel lines. So calculate the distance between two parallel lines. First we note down the point. Okay, so the distance between parallel line is between parallel lines r bar is equal to a1 bar plus lambda b bar, and r bar is equal to a2 bar lambda b bar is mod of a2 bar minus a1 bar into b cap. Okay, this is the distance between two parallel line. Okay, we take one example. Example, find the distance between parallel lines. R bar is equal to 2 I cap minus j cap plus k cap plus lambda into 2 I cap plus j cap minus 2 k cap, and second line is r bar is equal to I cap minus j cap plus 2 k cap plus mu into 2 I cap plus j cap minus 2 k cap. Okay, we want to calculate here distance between these two parallel lines. So the distance between these two parallel lines is parallel lines. First here r bar is equal to a1 bar plus lambda b bar, एंड सेकंड हमें लाइन का इक्वेशन पता है कि क्या है, ये आपका a2 बार प्लस लैम्डा b2 बार. यहाँ पे हमें फॉर्मूला भी पता है, जब टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इंटू वॉट बी कैप को हमें उसे बी कैप मतलब क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ बी. Now what is given to us, a1 bar is equals to 2 I cap minus j cap plus k cap, and what is the value of a2 bar is I cap minus j cap plus 2 k cap. अभी बी बार देखो, दोनों में भी बी बार क्या रहेगा, सेम ही रहेगा.
Okay, when two lines are parallel to each other, then what happen? B bar is same. So B bar is equals to this. We want to what calculate here? First B cap. B cap क्या आएगा? B cap is equals to B bar divided by modulus of B bar. And what is the modulus of B bar? Is equals to under root of 2 square plus 1 square minus 2 square, which is equals to under root of 4 1 and 4. So 9 का ये क्या आ जाएगा? 3. So next one is A2 bar minus A1 bar is equal to I cap minus J cap plus 2 K cap, and here minus 2 I cap minus J cap minus K cap is equal to I cap plus K cap, and B cap is equal to 2 I cap plus J cap minus 2 K cap divided by 3. So A2 bar minus A1 bar cross B cap is equals to I cap J cap K minus 1 0 1 here 2 by 3 1 by 3 and here minus 2 by 3. So 1 by 3 into I cap J cap and here K cap minus 1 0 and 1 2 1 and minus 2. What we do, हमने यहाँ से ये जो 1/3 था ना, we can take common from all the row. Okay, so what I get here, this find out the determinant of this value 1/3 into here I cap into what? minus 1 minus J cap into minus 1 sorry minus ये J cap into 2 minus 2 and K cap is equals to minus 1, which is equals to 1/3 minus I cap minus K cap. So what is the distance between these two parallel line is A2 bar minus A1 bar into what? B cap, which is equals to under root of 2/3 units. Okay, this is the method to find out the distance between two parallel line. Okay, now next point is equation of plane. यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका लाइन का देखा, अभी हम इक्वेशन ऑफ प्लेन देखेंगे. Equation of definition, a parallel perpendicular line to plane, it is called as the normal to plane. Okay, normal मतलब क्या रहता है? perpendicular line to a plane. Okay, draw करते हैं. if there is one plane, so perpendicular drawn to this plane, this is called as the n bar. Okay, equation of the plane
passing through a point and perpendicular to a vector. ओके, यहाँ पे आगे लिखती हूँ मैं, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस लाइन। तो ये क्या रहेगा आपका, थ्योरम करके लिखते हैं, दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point a bar and perpendicular to the vector n bar is r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि ये अगर एक वेक्टर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, एक परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू n बार है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे एक लाइन है पी आर बार, और ये है आपका पॉइंट ए बार। तो ये लाइन जो आपकी ए पी बार आती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बार इंटू एन बार इज इक्वल्स टू ए बार इंटू एन बार रहेगा, इफ देयर इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए लाइन। ओके, देयर आर सम रिमार्क। Remarks are, first, r bar into n bar is equals to a bar into n bar. It is called as the vector equation of plane in scalar product form। Okay, second one is, अगर a bar dot n bar is equals to d, then r bar dot n bar is equals to a bar dot n bar takes the form r bar dot n bar is equals to d। Okay, now Cartesian form are, first, the equation of the plane passing through the point a x1 y1 z1 and direction ratios of whose normal are a, b, c is
ax minus x1, b y minus y1, and c z minus z1 is equals to 0. Okay, now this is the equation of the plane passing through the point this. Okay, we will take one example so this concept is more clear to you. So example, find the Cartesian product और कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं हम, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through a 1 2 3 and the direction ratio of whose normals are the equation of plane passing through a line having direction ratio a comma b comma c is a x minus x1, b y minus y1, and c z minus z1 is equals to 0. So x1 y1 z1 is equals to 1 2 3 and direction ratios are ratio of normal are 3, 2, 5. Therefore, the Cartesian product और ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये देखो ये आपका फॉर्मूला है। मैंने जस्ट इस फॉर्मूला में क्या किया है, वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आई जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स एंड देन वी विल सॉल्व। आपका यहाँ पे अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 y1 z1 दे गिव्स अस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, a इंटू a की वैल्यू है 3, x माइनस हियर x1 इज 1 2, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हियर y माइनस 2 प्लस 5 z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो सॉल्व दिस 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 5z minus 15 is equals to 0. So here 3x plus 2y plus 5z minus 3 minus 4 minus 7 minus 7 minus 15
minus 22 is equals to 0. Okay, so this is the answer. Okay, by this way we can solve this example. Okay, thank you.